Hi guys, a very good evening to all of you. My name is Lakshmi and please confirm if I am audible and visible. We'll begin. Am I audible? Am I visible? Namaste Lalit. Good evening Marshi. Good evening Harpreet. All good? Then let's begin. Welcome to ESI for regulatory bodies. In this very session, we'll not only be focusing on phase 1 but phase 2 as well as some points you can also remember for your interview preparation, because after all in your interview they'll also try to check what all officer quality you have. देखो फर्क है SBI PO के इंटरव्यू में और RBI के इंटरव्यू में ग्रेड बी का. SBI PO में RBI रूल बना के दे रहा है और SBI कुछ हद तक फॉलो कर रहा है, जनरली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ज़्यादा है. RBI में आप MPC आप हो सकता है कभी आप अगर सही टाइम पे ज्वाइन किए तो यू कैन बिकम हेड ऑफ द MPC कमिटी. तो इस तरह से दे वांट ऑफिसर लाइक क्वालिटी. तो उनको चाहिए ऐसा जिसको समझो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है. एंड दैट्स व्हाई even interview preparation they will be checking what officer like quality you have. Apart from this, one more thing I want to highlight. Sometimes you people ask me कि ये जो सेशन में कुछ न्यूज़ है वो PIB में नहीं है. रीज़न भी नहीं होंगे क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से भी काफ़ी आर्टिकल्स पिक करती हूँ. जैसे कि आज ही के न्यूज़ में वील बी टॉकिंग अबाउट जेम पोर्टल. हालांकि वो न्यूज़ में PIB में भी था बट छोटा सा उसका हिस्सा था. बट वील गो वन स्टेप अहेड एंड वील ऑल्सो लुक कि जेम क्यों लेकर आए. सो दैट्स हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. Okay, in the free weekend, okay, I'll just check it myself then if that's the case. Yeah, T+0 settlement cycle. एक तो आप लोग जवाब ही नहीं देते हो. अब इतने आसान क्वेश्चन का मुझे जवाब तो मिलना चाहिए था ना. Only few people, very few of you are actually asking. That's not answering. That's not a very good thing. Anyways, me pushing myself and getting motivated by my own self. So that's why let's discuss this T+0 settlement cycle. Yes, T+0 settlement cycle was there in news regarding your stock market. Stock market से related this T+0 settlement cycle is. देखो क्या होता है, एक होती है ऑर्डर डेट, एक होती है ऑर्डर डेट जिसपे आप ऑर्डर प्लेस करते हो कि मुझे ये वाला शेयर चाहिए, इस सो एंड सो कंपनी का शेयर चाहिए. You had this order date and on this order date you put your order. क्या शेयर्स आपको उसी दिन अलॉट होते हैं? नहीं, आपको शेयर अलॉट होते हैं T+1 डे पे, मतलब द वेरी नेक्स्ट डे. तो जिस डे पे आपको शेयर अलॉट होते हैं उसको बोलते हैं सेटलमेंट डेट. इस डे पे आपके अकाउंट से पैसा भी कटेगा और आपको सब्सिक्वेंटली शेयर्स भी अलॉट कर देंगे. क्या ये हमेशा से T+1 था? तो नहीं. जब तक NSE नहीं आया था, व्हेन NSE वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, फोर्टनाइटली सेटलमेंट होता था. फोर्टनाइटली मीन्स हर 15 दिन में. मतलब आज अगर आप बोलो कि मुझे ऑर्डर ये मुझे सो एंड सो कंपनी के शेयर्स चाहिए, 15 दिन बाद आपको वो शेयर मिलेंगे. द सिस्टम वाज सो स्लो. व्हाई डू यू थिंक वी एक्चुअली हैड दिस T+1 सिस्टम तक हम पहुंच पाए? ऑल थैंक्स टू द डिजिटल पेमेंट्स. All thanks to the digital payments, the UPI and the settling system that was so fast. Apart from this, आज हम बात कर रहे हैं T+0 सेटलमेंट की. मतलब हम ये चाह रहे हैं कि ऑर्डर डेट और सेटलमेंट डेट they coincide, they should be same. Why do you think we are focusing upon that? Again, thanks to the digital payment, thanks to the DMAT account that is there, and also the digital applications that are there. काफ़ी ईजी हो गया. सो फॉर सम 25 country, so from 25 companies which the government has earmarked, it is saying if you will get, order, if you place your order for the shares before 1:30, you will get the shares on the same day by 4:30. So date of order as well as settlement date will coincide, T+0. I hope that's clear. Guys, why do you think? Now, the question will not end over here. RBI can ask you what are the things, what are the pros of this T+0 settlement. Can you please tell me, आपको क्यों लगता है T+0 settlement will be a game changer, or why do you think it's good? Or if at all bad, तो bad बता दो. Why do you think it's good? It will increase the efficiency of the market. It will increase the efficiency of market. How do you think it will do?
मार्केट एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ना, आपके पास उसी दिन आपका शेयर आ गया, या फिर जब आपने शेयर बेचा तो आपके पास उसी दिन कैश आ गया, यू हैव मोर अमाउंट ऑफ मनी, आप उसको अगले शेयर में लगा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस जो कोलेट्रल है आपको वो भी नहीं ज़्यादा रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा आया तुरंत ही आपको शेयर क्रेडिट हो गए. तो रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग more or less, more participation, it will have more of investment which is going on. तो ये तो कुछ प्रोज हो गए, बहुत अच्छी चीज़ है. ऑब्वियसली कोई नई चीज़ आई है तो प्रोज तो उसके होंगे ही, तभी देखिए आए, अगर कॉन्स होते तो नहीं रहते. इज इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू हैव T+0 सेटलमेंट, येस और नो? क्या इंडिया अकलौती ऐसी कंट्री है विच हैव दिस सेटलमेंट सिस्टम T+0 करके, या और भी कोई कंट्री है? येस, चाइना इज वन, मॉस्को में दिस थिंग्स हैपन. बट व्हाट डू यू थिंक ग्लोबली क्या परफॉर्म हो रहा है फिर? अगर T0 लेवल ग्लोबली नहीं है तो क्या है ग्लोबली दे आर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर T+2 सेटलमेंट साइकिल. तो मतलब इंडिया इज वे अहेड फ्रॉम दैट, दिस हैज टू बी सेड. बट सारे प्रोज नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द कॉन्स? हर चीज़ तो अच्छी हो नहीं सकती, देयर माइट बी सम कॉन्स, और कॉन्स की जगह चैलेंजेस लिख लेते हैं, बेटर वे टू से. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चैलेंजेस? वेरी गुड संदीप, संदीप हैज वेरी राइटली सेड, अगर पैसा उसी दिन आ जा रहा है इट विल लीड टू मोर वॉलेटिलिटी, और यू कैन से फ्लक्चुएशन बहुत होंगी आपकी मार्केट में. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कभी भी पैसा लगाए कभी भी ले जाए, इनवर्ड पैसा आना, डॉलर्स का आना या डॉलर्स का आउटफ्लो हो जाना, दैट विल बी वेरी फ्रीक्वेंट, मोर वॉलेटिलिटी. और इसी वॉलेटिलिटी की वजह से हमने अभी इस सिस्टम को पूरे को सिर्फ 25 कंपनीज तक रिस्ट्रिक्ट रखा है. We could have applied to all of the companies all of a sudden. Apart from that, what do you think? Small investors को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना होगा all of the times. Why? क्योंकि आपका जिस दिन पे आपने ऑर्डर प्लेस किया है उस दिन आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, अदरवाइज ऑब्वियसली डिफॉल्ट होगा. तो आपकी सेटलमेंट डेट और ऑर्डर डेट अगर सेम है, मतलब यू हैव टू कीप लम सम मनी एट योर हैंड, एट योर डिस्पोजल. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटेंसिटी ऑफ दिस वॉलेटिलिटी माइट ऑल्सो इंक्रीज. अभी भी वॉलेटाइल तो है मार्केट, रशिया यूक्रेन में कुछ भी होता है स्टॉक मार्केट पे उसका इंपैक्ट आता है, थोड़ा बहुत ही सही पर आता है. वॉलेटिलिटी की इंटेंसिटी शायद और बढ़ जाएगी. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस विच दिस T+0 सेटलमेंट्स कम विद. सो दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द न्यूज़. इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर ज़रूर रेडी कर लेना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हो रहा है, ग्लोबली क्या होता है, एंड व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द चैलेंजेस, T+0 का मतलब क्या है. सो ऑल दीज थिंग्स बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन. मे बी नॉट 600 वर्ड्स तो नहीं आएगा, बट इट कैन बी आस्क्ड विद सम अदर थिंग. तो इसलिए 100, 200, 300 वर्ड्स का एक राइटअप तैयार रखना. नाउ लेट्स रिवाइज वॉट एवर वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. So the best way to revise anything is via questions. Now try to solve this question. अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कल का सेशन, फ्राइडे का सेशन जाके देख लेना. A pilot program was launched, cashless treatment to victims of road accidents. So this was for motor vehicles. It was launched by Ministry of Road Transport and Highways. Which of the following is correct? What do you think? Which of the following statement is correct? Yes, first statement is incorrect. It was not New Delhi, it was Chandigarh. Amazing. Very good, Rahul. What about the next statement? A तो incorrect है. I am asking you about the correct statement. तो A तो पहले ही चला गया. What about the second one? It is implemented by Road Wings and Transport Wing of Ministry of Road Transport and Highway. Yes, it is not this. It is NHA, National Health Authority. So NHA is the one who is implementing this with the help of various state government agencies. Cashless treatment कितना है? 1.5 lakh per person per accident for a maximum period of 7 days. So this is correct. What is wrong in the D part? The coverage applies to road accidents that are only caused by the use of motor vehicles. नहीं, चाहे मेजर हाईवेज पे हो चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी सड़क पे अगर एक्सीडेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज मोटर व्हीकल्स, you will get the amount refunded in your account. Compensation मिलेगा पूरा. Hospitals can raise the claims for reimbursement from the Motor Vehicles Act fund that was created in 1994. That simply means, ये तो सही है, Motor Vehicle Accident Fund से hospitals can claim the amount, but the year is wrong.
Year is not 1994, year is 2021. So that's the case. I hope rest, if at all you have any problem in this, you can just go back and see the Friday's session. Next thing, which of the following is not allowed under the Jan Samarth portal? Jan Samarth portal के बारे में हमने कल पढ़ा था. KCC linkages करी गई हैं. किसान credit card linkages have been done. You have to tell me Jan Samarth portal में which of the following is not allowed? Allowed नहीं है. What do you think? Which of the following is not allowed? Allowed नहीं है. क्या है allowed नहीं है? We talked about 4 things that are allowed. इसमें से एक allowed नहीं है. Health related loans were not there. Loans मिलेंगे किसके लिए? Education के लिए, agri के लिए, agri infrastructure creation के लिए, business activity के लिए, livelihood के लिए, health के लिए बात नहीं की गई थी वहाँ पे. So therefore health related loans ऐसा कोई concept नहीं है. I hope that's clear. Next thing. कल हमने MG नरेगा के बारे में बात करी थी, बट आई वॉन्ट टू टेक अ स्पेशल सेशन ऑन MG नरेगा वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू MG नरेगा एंड द रिसेंट चेंजेस दैट आर बीइंग मेड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट MG नरेगा में देयर इज अ मैंडेट दैट यू हैव टू गिव अ सोशल ऑडिट. आपको सोशल ऑडिट करना है, फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है. मतलब आपको बैलेंस चेक नहीं करना है कि कितने पैसे दिए कितने पैसे आए, बल्कि सोशल ऑडिट करना है. दैट मीन्स दैट यू हैव टू गो टू ईच हाउस होल्ड. हर एक हाउस होल्ड में जाके ये चेक करना है कि MG नरेगा का फ़ायदा उसे मिला या नहीं मिला, और अगर उसने काम किया तो उसे पैसे मिले कि नहीं मिले. सो दीज थिंग्स. तो आपका जो सोशल ऑडिट है, इट इज़ अंडर विच सेक्शन ऑफ MG नरेगा एक्ट? वेरी गुड, इट इज़ अंडर सेक्शन 17 विच सेज दैट यू मस्ट हैव अ सोशल ऑडिट. वाई डू यू थिंक गवर्नमेंट ने वेजेस इंक्रीज करी है? नॉट ड्यू टू इलेक्शन, बट वैसे इंक्रीज करी है क्योंकि सोशल ऑडिट हुआ होगा, पता चला होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिल रही. अब एक और इशू आता है आपके MG नरेगा में. बहुत सारे लोग कहते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. MG नरेगा में आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ही तो हो रहा है. पहले क्या होता था? अकाउंट बेस्ड होता था. अर्लियर इट वाज अकाउंट बेस्ड वेयर योर नेम, या मतलब जो भी बेनिफिशियरी था उसका नेम, उसका IFSC कोड, this was what was given. But now your Aadhaar card will do. Your Aadhaar PAN linkage, if it is there, you will get the DBT direct in your account. Earlier this was there, but now this is there. But certainly there is a problem in this thing as well. I'll make a special video on this, keeping in mind that if some descriptive question come, how are you going to attempt it? So that's from my side. So let's move ahead. And CPI तो बहुत पहले से बढ़ा था, तो फिर अभी क्यों? So this is because social audit and inflation का जाके पता चला. Anyways, we will discuss upon that. Moving ahead, the scheme was introduced with the objective of providing adequate and timely credit to the farmers. For what? For agricultural operations. In 1998. Later, it was further extended for the investment credit requirement of farmers, that is in allied as well as non-farm activities. In which year? You have to tell me. सबसे पहले तो ये बताओ, which scheme am I talking about? You need to tell me the name of the scheme. Which scheme am I talking about? Very good. Very good, Maharshi. Good, Aditya. I am talking about KCC, Kisan Credit Card. किसी को अगर याद हो किसान क्रेडिट कार्ड, वो यहीं से पकड़ लेगा. कहाँ से? फार्मर्स एंड देयर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कब शुरू हुई? 1998 में. यहीं से समझ में आ जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट एनीवेज, अंडर द स्कीम फार्मर्स गेट पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू व्हाट अमाउंट? पर्सनल एक्सीडेंटल या फिर डेथ इंश्योरेंस का भी इसके अंदर एक प्रोविजन है. सो यू हैव टू टेल मी व्हाट अमाउंट इज बीइंग प्रोविजनड फॉर दैट. गुड इवनिंग सुमित, लिटिल बिट लेट टुडे, नो वरीज. टेल मी, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का क्या प्रोविजन है इसके अंदर? वेरी गुड. सो गाइस, इसके अंदर जो चेंजेस थे, इट वाज डन इन द ईयर 2004. देन इन 2019 वी बॉट दिस न्यू e-Kisan credit card. Apart from that, under the scheme, farmers get personal accidental insurance up to ₹50,000. Important. I hope that's clear to you all. Moving ahead, and let's see the KCC scheme. If you are not able, I hope you will be able to see this. Now, in your KCC scheme, what was the aim? To meet the credit requirements of the farmer for crop production, for post-harvest expenses, for farm assets, for other allied activities. This was done. Are you able to see this? I hope yes.
Otherwise, I'll share this PDF. You will be able to see this from there. What was the launch year? It was launched in 1998. In 2004, it talked about covering long-term and working capital loans. Long-term working capital for both agri as well as allied activities. Next thing is KCC. The scheme was revisited for simplification and electronic KCC was also mandated under this, for which NPCI actually helped. I hope अब तक तो सबको पता होगा NPCI का क्या क्या function है. It is very simple. Now the eligibility criteria. क्या करते हैं? लोन ले रहे हैं तो कुछ eligibility होगी. It is given to all the farmers irrespective of their farmland. Next thing, age limit is 18 to 75 years. Co-borrowers if above 60 years of age. If you know you are borrowing under KCC and you have crossed that age limit, then co-borrowers is mandated. Co-borrower has to be a legal heir. Remember this. Now tell me all categories of farmers when I say. Am I talking about the tenant farmers? Yes or no? Are tenant farmers given the benefit of this KCC? Next thing, interest rates. What about the interest rates? So interest rates are linked to your MCLR. 3 lakhs up to money for 3 lakhs loan, you can get 7% of interest rate with 1.5% of interest subvention. Extra 3% subsidy will also be given if you timely repay your loans for prompt repayment. You know, there is a specific loan tenure. For short term, you will get for 1 year. For long term loan for 5 years. Accidental insurance for permanent and death, rupees 50,000. For others, rupees 25,000. Now, who all are, from where you can get the loans? You can get the loans from scheduled commercial banks, RRBs, SFBs, cooperative banks. So, that's the case. Any problem in this? I hope that's ultra clear to you all. There is nothing much. If you are not able to see the screen, I'll give you the PDF because no matter, whatever I do with this mind map thing, it is clear on the sheet, but it is not clear on the board. So, pardon me. Now, tell me which bank has allowed digital FDs for NRI customers, and these FDs are, which currency denominated? Is it pound, sterling, is it dollar, which currency denomination is there? Very good, Rahul. It is Axis Bank. So, Axis Bank is the one which is providing digital dollar denominated FDs for NRI customers. So, here it is dollar. Now, Dash is the world's first Om-shaped temple. So, it is situated in which place? It is in, very good. This second thing, you have to tell me the place, the state where it is. It is in Gujarat, Rajasthan. Very good. Next thing, Dash is actually, a technology transfer to Biomed. Which IIT has done this kind of technology transfer to Biomed for first recombinant vaccine for swine fever virus? What is the name of that IIT, if at all you can recall? IIT Guwahati, okay. What about others? Lastly, tell me, Food Waste Index Report 2024, it talks about what, it is reported by whom? You have to tell me the name of the organization. What is the name of the organization which has published this report? Food Waste Index Report 2024. UNEP, amazing. Now tell me SDG, which SDG talks about hunger? Which SDG talks about hunger? One or two? Oh, I got another figure, that is 3. 1, 2 or 3? Good, SDG 2. So, these are the answers of whatever we have discussed. For the PDF of this very session, you can download the Oliveboard's app, and on this very app, under the YouTube class PDF session, you will get the PDFs. Apart from this, there is also, multiple courses that are going on. If still you have not started your RBI's preparation, it's high time. Start it as early as possible. Kitni preparation hui hai? You can just watch a session that I took on YT, I guess on Friday. You can just go and see. Over there, I discussed 30 questions within 30 minutes, I guess. So, you can just see if you are able to answer them. Even if you are able to answer half of them, it's okay. Because these questions were really very easy. Not of exam standard, that I can tell you. Exam standard is a little notch higher, a way notch higher. But nevertheless, it's better to start than, seeing what is easy, what is tough. So, no worries, you can just go and check it out.
अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फेयर इनफ, वेरी गुड, अदरवाइज इट्स हाई टाइम यू थिंक. नाउ National Power Training Institute (NPTI) and PTC India, they signed an MOU. What was this MOU for? It was for R&D, research and development in energy domain. You have to tell me, it focused upon sustainable development goal. Which sustainable development goal talks about clean energy? Affordable and clean energy, very good. It is SDG 7. So SDG 7 talks about your affordable as well as clean energy. So this question is specifically for your SDG knowledge. If at all yaad nahi hai, go back, revise all the 17 SDGs. It is an online platform or an e-marketplace where sellers and buyers can fulfill their needs of product. Completely paperless it is, completely cashless it is. It is there to promote e-governance and also to bring in transparency in the public procurement. You have to tell me when was this portal launched. Also tell me which topic or which portal am I talking about. Yes, it was launched in 2016. Am I talking about e-Nam? Yes or no? Am I talking about e-Nam or GEM? वेरी गुड. आई एम टॉकिंग अबाउट जेम पोर्टल. सो अगर ई नाम बोलूंगी तो मैं फार्मर्स की भी बात करूंगी, और मैं यहाँ बोल रही हूँ ई मार्केट प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स. सेलर कोई भी हो सकता है, डेफिनेटली वो डोमेस्टिक सेलर है, और बायर डेफिनेटली पब्लिक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. सो दैट्स वाई जेम पोर्टल इज द करेक्ट आंसर. अब जेम के बारे में क्यों डिस्कस कर रही हूँ? आज के बाद इस मंथ से वॉट एवर डेटा इज देयर, ट्राई करना उस डेटा को भी याद करो, बिकॉज आरबीआई का एक चीज़ है कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले का डेटा वो पूछता है, और डेटा काफ़ी ओरिएंटेड पेपर रहता है योर फेज 1 एज वेल एज योर फेज 2. सो इसलिए नाउ वील फोकस मोर ऑन डेटा. सो व्हाट इज दिस जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? सो इट इज शोइंग अ ट्रेल ब्रेजिंग जर्नी. व्हाट इज इट शोइंग? जब जेम शुरू हुआ था इन द ईयर 2016, it was just 422 crores. That's where it began from. Now इसके ऊपर जो होने वाला ट्रेड है that has crossed 4 lakh crore, which is a big figure. So GEM has doubled its GMV compared to the previous year. तो मतलब पिछले साल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जंप है. So that is what it is showing, a remarkable performance. Yes, Vijayan, you are right. Today is RBI day, and you are very much right. And apart from this, rupees 90 coin is also there in the market. Next thing. Now let's see what is the highlights. Some other things that were also written in your PIB. It said 2.5% surge in the services procured, onboarding of 21 lakh sellers and service providers. Highest procuring states were like Gujarat, your Uttar Pradesh and your Delhi. They have surpassed, even their own basic quota. So that means they are going good. They are doing good. They are doing fairly well. Apart from this, GEM कुछ इनिशिएटिव खुद से भी लॉन्च किया था, जैसे कि वोकल फॉर लोकल. ऑब्वियसली यहाँ पे 50% से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट आपके लोकल प्रोडक्ट की हो रही है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्टार्टअप रनवे, वुमनिया have provided opportunities even for the marginalized community to work or to become an entrepreneur. Next thing, orders which were amounting to 50% of this gross merchandise value वो इन्हीं सबसे प्रोक्योर किए गए थे. So that shows the inclusivity of the platform. Government e-marketplace has partnered with Tata Consultancy Services ताकि वो अपना पोर्टल टेक्नोलॉजिकली और एडवांस कर सके. That is what it says. One more thing, guys, with this I would like to tell you, government e-marketplace से 3 pros. What are the pros and what are the challenges involved? Please, this is your homework. If you will give me the answer, we'll discuss it. Either I'll share you a model answer on this. I'll tell you the pros and cons. Otherwise, we'll discuss it in tomorrow's session. But I want your participation as well. Nevertheless, moving ahead, which one of the following topics did the Meghyaan 2024 seminar primarily focus on? So your Meghyaan 2024, it happened very recently. You have to tell me
इसमें से कौन से टॉपिक पे दिस समिट और यू नो दिस कॉन्फ्रेंस वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इतनी शांत ऑडियंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. इतने सारे बच्चे क्लास में हो और एकदम चुप बैठे हो. दिस इज नॉट गुड, नॉट फेयर इनफ. गुड गुड, वेरी गुड सुमित. महर्षि बी पे नहीं रुकना है, थोड़ा सी भी चेक करना है. पहले सारे ऑप्शंस चेक किया करो, ओनली देन मार्क योर आंसर्स. एनीवेज, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेवल ऑपरेशंस. तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इंडियन नेवी पे भी हो रहा है. दिस इज व्हाट इट सेज. एनीवेज, लेट्स सी व्हाट all was discussed in this Meghan 2024. So meteorological and oceanographic seminar it was talking about climate change and also your oceans. It was also telling how climate change will impact your Indian Navy operations. It was organized on the very same day on which World Meteorological Day we celebrate, that is on 23rd of March. What was the theme? The theme was at the front line of climate action. Next thing is, on this very particular day, they also rolled out an app. What is the name of the app? It is Indra application. This Indra stands for Indian Naval Dynamic Resource for Weather Analysis. It was developed by BISAG in coordination with Directorate of Naval Oceanography and Meteorology by Indian Navy. And your application aims to disseminate weather related information to, you know, for better decision making. So all these apps, you know, basically ये real time data sending के लिए ही बनाई जाती है, for real time data assessing as well. Now some offbeat thing, that is G20 Employment Working Group EWG meeting. कहाँ हुई? It happened in Brasilia. What were the highlights? So the highlights were collaboration between ILO and OECD happened. It showed that, you know, in this collaboration has actually benefited. Why? Because they have drafted terms of reference for a feasibility study. ये लोग study करना चाहते हैं that how, you know, employment thing is going on around. What is the disparity that is there? Next thing is, this study will plan 2 years. The study will go for 2 years. The study which they are talking about, this ILO and OECD study, and which will be across various sectors like your IT, your care economy related sector, and you know, green sectors. Now guys, कुछ challenges, you know, PIB में mentioned थे, and I found that very interesting, which you can use directly in your answers. So I have straight away picked it up from there. I hope you are able to see this. This is very much visible. So let's focus. This specific thing says that there are multiple challenges which the women, you know, come across. Women have various challenges specifically. Why? Because, you know, women are, you know, in this caregiving activities. अब जब वो caregiving activities में है, in the care economics, they are not getting money. If they are not being paid, their contribution in the GDP, you know, remains a little bit, you can say, less, or it is neglected completely. So what is India's approach? What is India doing for these women? So what are these? 2019 onwards, we are using this time use survey. We actually try to find out कि unpaid work तो ठीक है. What are, you know, what are the women involved in paid and unpaid work? तो एक अलग तरीके का survey where they are actually finding out कितनी देर काम किया, paid में किया हो या unpaid में काम किया हो, काम कितनी देर किया. So that is time use survey. But you know, there are more facets to this, but as of now, just remember this only. Palna scheme we bought, where we are focusing upon, you know, quality daycare for children of the working women. कौन सी scheme के अंदर है? It's under which umbrella scheme, if you can tell me? Then we bought Code on Social Security, where we are focusing on, you know, social sector benefits for gig workers, for platform workers, and as well as for other, you know, across various genders. Then the concept of maternity leave, where it says that if a female is pregnant, you know, she'll get a maternity leave of 26 weeks. Earlier it was just 12, I guess, but now it's 26th. Mandatory crèche facility was also being done, where जहाँ पे जिस भी establishment में 50 से ज़्यादा employees हैं, ये employees हैं, female employees नहीं लिखा है. अगर किसी establishment में 50 से ज़्यादा employees हैं, you should have a crèche facility. Next thing, work from home provisions were also there. You know, flexible conditions were being there. COVID also brought in, you know, various changes. Apart from that, as you people are also highlighting, Palna scheme is under Mission Shakti,
एंड ऑल्सो यू नो अलग अदर गाइडलाइंस वर ऑल्सो बीइंग बॉट. अब तो हमने विमेन का लेजिस्लेचर में भी यू नो से बढ़ाने के लिए वी हैव बॉट एन एक्ट, दो इट इज नॉट बीइंग इन प्लेस एनीवेज. So government efforts which have aided for the notable decrease in the gender pay gap. So what has Indian government doing for this gender pay gap? जो फीमेल और मेल को जो पैसा मिल रहा था, the wages they were getting, उसमें बहुत डिफरेंस था. तो उसको कम करने के लिए क्या किया है? कोड ऑन वेजेस 2019 विच से कि यार जेंडर कोई भी हो, सैलरी सबको बराबर दो, नो डिस्क्रिमिनेशन. देन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जहाँ पे स्पेसिफिकली दे आर फोकसिंग ऑन विमेन. Collateral free credit is being given. Skill India mission, again women are being focused. MG Narega, where 1/3 seats are reserved, seats कह लो या 1/3 jobs are being reserved for women. Banking access, आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना हो या फिर the bank accounts which the women have, it has increased. In the last 5 years we have seen a tremendous increase in the financial assets that are in the name of the female. ऑल्सो क्लोजिंग द जेंडर पे, वेयर देखो जेंडर पे का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल PIB में भी लिखा था. क्या? चाहे क्रिकेट मैच मेल का हो या फिर फीमेल का हो, दे ऑल विल बी अवॉर्डेड इक्वल मैच फीस. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज देमसेल्व्स गिवन. सो इसको याद कर लेना एंड यू कैन कोट इट एनीवेयर. इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल टू से सच थिंग्स दैट मेल हो या फीमेल हो, क्रिकेट मैच है ना, दोनों की फीस बराबर होगी, दोनों की टिकट्स एक ही प्राइस पे बिकेंगी. सो अगेन अ वेरी गुड थिंग. नेक्स्ट थिंग, many countries yet to fully implement steps to prevent misuse of this virtual assets. That is what your FATF said. ये FATF क्या है, ये virtual assets क्या है? Let's see that. Virtual asset service providers, VASP. What are these? A business that conducts one of the following activities. Either it exchanges your virtual assets, your fiat currencies, cryptocurrency and all. Exchanges happen between one or more forms of virtual assets. Crypto का Ethereum में बदल जाना and all these things. Transfer, safekeeping, if you are keeping those, or participating in financial services related. तो FATF क्या चाहता था? Your Financial Action Task Force, what it wants was कि जो virtual assets है that have to be kept in check. क्यों? ये वर्चुअल एसेट्स आपके मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फाइनेंसिंग में यूज हो रहे हैं. दैट इज व्हाट इट सेड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग FATF. सो एन इंटरगवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी डेडिकेटेड टू कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1989. इंपॉर्टेंट, याद कर लेना. कब बनी थी? G7 समिट हो रही थी इन पेरिस. And at that particular time this was formed. पर जब ये बनी थी, ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी थी. In the year 2001 it was expanded to include terror financing as well. तो जब बनी थी it was only for money laundering. Later in the year 2001 for terror financing thing was also added. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? पेरिस, फ्रांस में, because obviously G7 समिट पे बनी थी, that's why Paris, France. मेंबर्स कौन है? 39 कंट्रीज आर मेंबर्स इन विच इंडिया इज ऑल्सो देयर. अब इसका मेंबर होने के साथ साथ इसके कुछ एडवाइजरीज हैं जो माननी पड़ती है, जैसे अभी वर्चुअल एसेट्स से रिलेटेड एडवाइजरी थी. सो इंडिया बिकेम अ मेंबर इन द ईयर 2010. अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू मस्ट टेक अ नोट ऑफ. Okay, T. Raja Kumar is the head of FATF. Please remember that. Thanks Sumit for the information. Now guys, FATF से रिलेटेड दो लिस्ट बहुत न्यूज़ में रहती है. What is that? एक है ब्लैक लिस्ट. ब्लैक लिस्ट वो कंट्रीज हो जाती हैं जो पहले ग्रे लिस्ट में होती हैं. तो पहले ये समझ लेते हैं ग्रे लिस्ट क्या होता है. सो ग्रे लिस्ट आर नथिंग बट द कंट्रीज दैट आर सेफ हेवन, जहाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग करने वाली सारी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट नहीं किया जा रहा. देयर आर सर्टेन लूप होल्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय दीज notorious elements. Apart from that, government is not trying or having sufficient policies to curb them. This inclusion serves as a warning. Warning दी जाती है कि अब रुक जाओ, otherwise you will enter into blacklist. अब blacklist में enter है मतलब these were non-cooperative countries. Help नहीं कर रही थी ये गवर्नमेंट की. These support terror funding and your money laundering activities. अगर मैं आज की डेट की बात करूँ, so these 3 countries, North Korea, Iran and Myanmar, these are under the blacklist categories. blacklist में जाने का क्या होता है? blacklist ही तो किया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा?
there are certain things जैसे कि no financial aid will be given by IMF, World Bank, ADB, European Union and many. They also face a number of international economic transactions. कुछ import export उससे बंद कर देते हैं. So these kind of relations, you know, trade relations, economic relations, they get hampered. So that's the case. So guys, बहुत discuss किया FATF के बारे में. A question for you all. FATF was established in the year 1989 to develop policies against money laundering and terror financing. What do you think? Is the first statement correct or not? Yes, Vijayan, actually government is the one who is supporting the activities. Why do you think even in Pakistan was, you know, Dawood being allowed to stay? Pakistan could have easily handed him or, you know, other terror financing people to India. After all, globally they have been recognized as, you know, terrorists. तो अब shelter home provide कर रहे हो तो obviously ना problem तो government में है. Very good, Aditya. This is incorrect. Why? Because it was only for money laundering. Terror financing हम 2001 में लेकर आए. So when it was formed, only for money laundering. Next thing, Paris, France में है. India joined in 2010 and blacklist countries are those जो कि you know non-cooperative है. So this definition is for grey list and not blacklist. So therefore option number E is the correct answer. I hope that's clear. FATF को तो बहुत सारे और भी काम करने चाहिए थे, पाकिस्तान को भी ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए था, बट नेवरदलेस मूविंग अहेड, दिस आई गेस इज योर होमवर्क. आई फील आई विल गेट एन आंसर. एटलीस्ट कल की तरह मत करना यार, आंसर ही नहीं दिया. वन मोर थिंग, आई डोंट वांट टू रीड ऑल दीज थिंग्स. न्यूज़पेपर में था, गवर्नमेंट के यू नो ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल पे भी था. जस्ट कॉपीड पेस्टेड फ्रॉम दैट. न्यूज़ में इसलिए था, इसकी वजह से ऑर्डर ऑफ ड्रू ग्याल्पो, इट इज़ गिवन बाय भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन टू आवर प्राइम मिनिस्टर. बाकी सारे जो डिस्टिंग्विश अवार्ड्स है, इट इज़ रिटन. आई डोंट नो इफ यू नो योर RBI विल बी आस्किंग और नॉट, बट ठीक है, अच्छी समरी है. एटलीस्ट यू कैन जस्ट गो अहेड एंड रीड इट वंस. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको अपने पढ़ लेना. आई एम नॉट रीडिंग इट हेयर. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करते जाना, और PDF के लिए मैंने बता ही दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क. PDF here. You can get the PDF from here. You can just download the Oliveboard's app, and on this app you can go to YouTube Class PDF session. Over there you will get all the PDFs regarding this session. कैश क्रेडिट दे रहा है ना, किसान को क्रेडिट दे रहा है, लोन व्हाट इज यू कैन से. और इसके आप KCC से जब लोन लेते हो, अगर आप कोलेटरल देते हो तो यू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट either in the interest or you know the amount of loan that the bank can grant you. How you can work out on quant के लिए see, if you want to follow some mentor you can follow him, but एक चीज़ ध्यान रखना, at least you know go for SBI PO level means. IBPS का means की तैयारी करके जाओगे तो वहाँ पे फंस सकते हो. I would say at least SBI PO means तक का करना. SBI PO means का करके जाओगे क्वांट, RBI तो निकल ही जाएगा. रीज़न बीइंग, RBI में सिर्फ क्वालिफाई करना है. SBI में तो आपकी यू नो मेरिट बनता है मेंस से, बट RBI में यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई. कितना करना है? 4.5 नंबर लाने हैं 30 में से. एक DI सही हो जाएगी, यू विल गेट दिस नंबर. पर वो DI पिक करना विल बी अ टास्क, और उसके लिए प्रैक्टिस इज द की. सो फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ट्राई एंड प्रैक्टिस इट. अगर मैथ्स अच्छी है, मैं फिर भी बोलूँगी हफ्ते में 1 दिन प्रैक्टिस कर लो. अगर बहुत खराब है तो डेली कर लो. एक्चुअली KCC के अंदर यू नो देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट प्रोविजंस कि 1 क्रॉपिंग सीजन के लिए मिलता है 10% पे, फिर दूसरे क्रॉपिंग सीजन के लिए मिलता है. आई हैव जस्ट कवर्ड यू नो दोज पोर्शन ऑफ KCC दैट आर इंपॉर्टेंट. इसने सब कुछ कवर नहीं किया है. प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ दैट, क्योंकि सब कुछ पूछा नहीं जाएगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज प्रोबेबली, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू जस्ट यू नो मग अप दिस KCC. इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स है. सो दैट्स वाई यू नो वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड. सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते.
ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना।